Welcome to the IVM Podcast Network. TFG Fantasy Cricket is an IVM production, and you can also check out their other awesome shows like The Podcast, a show that gives you a weekly lowdown on Mumbai's food, culture, and new openings in the city. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Hello friends, welcome to a new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. And yaar, out of all the teams, Sri Lanka को 320 चेस करना था. Tell me one player who is, equivalent to Jayawardene, Sangakkara, Arvind Disal, Maruvan Attapattu. कौन श्रीलंका 320 चेस कर लेता है यार. And please tell me, you are a big time fantasy cricket fan. How do you live with cricket this? fan हूँ यार मैं. हाँ, नहीं but fantasy cricket तो खेलते हो, बचपन से खेलते आ रहे हो. How do you live with this? Angelo Matthews खेल रहा है वहाँ पे, तुम्हारी टीम में भी है. एक बार भी प्रे नहीं किया कि वो आउट होना चाहिए? इसलिए मैं खेलता नहीं इंडिया का मैचेस. मेरे को बताओ, ये फैंटेसी फैंस बताओ मेरे को. तो ये तो हमने इसके बारे में जिक्र किया है पहले भी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस. वी हैव कॉशन्ड यू, इफ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू अ टीम, मत खेलो. बट आई फर्मली बिलीव इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, वो पैसों से ज्यादा होता है. कोई बात बहुत ओपन करके बोल देगा तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन सच्चाई हकीकत यही है. तुम जैसे लोग, अभी आई नो यू ऑल्सो लव मनी, यू लाइक मनी, यू आर ऑब्सेस्ड, ऑल दैट, बट यू डोंट वांट टू प्ले द इंडिया मैच और आई शुड से मुंबई इंडियंस मैच बिकॉज यू फील देन तुम होप करो कि ये आउट हो जाए या वो आउट ना हो जाए. दैट इज देन वो अच्छा नहीं लगता. इट इज लाइक योर कैप्टन बैटिंग टू योर वाइस कैप्टन. इट इज सो डिफिकल्ट कि मतलब व्हाट वुड यू होप. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. But coming back to the match, I was very, very surprised. Nobody gave Sri Lanka a chance to even threaten India, let alone beating them. It was a thumping win in the end. They deserved the win. They deserved the win. Smart batting in the middle of 15 to 20 overs. I just felt their chase was going nowhere because Kusal Mendes and the other guy, I think, Danushka Gunatilaka, these two were consuming far too many balls. The Indians were bowling very well. Suddenly, they started getting a 4 in almost every over, and Virat Kohli was desperate. He didn't find anybody. He had to introduce himself. A few overs from Kedar Jadhav. We clearly missed Ravichandran Ashwin yesterday because we needed a good bowler, a good spinner. Ravindra Jadeja alone couldn't pull it off, and that's why I think now the correction will be made. One of Kedar Jadhav का fielding के लिए ऐसा लग रहा था मेरे को कल विराट कोहली उसको मार देगा. But he's a good fielder. एक्चुअली नहीं, वो बहुत राप चुका है. आप देख लो, कैचेस हो या फिर ग्राउंड फील्डिंग हो, he's basically a wicket keeper. So yes, Nikhil, see, at the end of the day, 8 runs, 10 runs, it counts. I mean, it makes a lot of difference. So if there is a weak link today, I understand Yuvraj Singh is getting runs. इसके वजह से he's just hanging by a thread, and I feel if someone has to go out to make way for Ashwin, either it is Hardik Pandya or it is Kedar Jadhav. दोनों में से एक जाने वाला. I feel Kedar Jadhav will get the axe. Quite possible because see, our batting is not a concern. We are 4 down, 5 down. We are getting 330 balls. And I don't think any attack, unless of course the conditions are very favorable for seam bowling, मुझे नहीं लगता हमें कोई दिक्कत होगी. You know what surprised me was, this is England. यहाँ पे 320 640 runs scored yesterday, yeah. And that's what I'm saying now. In England, kya conditions? What conditions? Conditions again. See, bored of this batting paradise. It's more like, as they say, it's like a fast food. The game. That's how the game has evolved today. If you are hungry, and if your taste buds are at an all-time high, you would go and eat some crap like McDonald's or Domino's pizza, and you would enjoy it for the first 30-40 minutes. It will digest. For the 2 hours, you will have that taste in your mouth. But the next day or a year from when you consume it, you will have problems. Longevity, nobody thinks. But if you eat a healthy diet, then your taste buds will say, what the hell are you feeding me? Your stomach will digest it nicely. You will have a peaceful night's sleep. All this is from experience, okay? A good lecture by a dietitian. Yeah, and then eventually, in the long run, it will help you. T20 और ये जो 600 की बात कर रहे हो, 650 की बात कर रहे हो, it's just like that. That match, 220-25, South Africa, Pakistan, had it not rained, I'm telling you, Pakistan might have still won. But that would have been the match of the tournament. Yeah.
even yesterday after getting 330 comfortably मार दिया यार. If this bowling, like Ganguly said at the end, if this bowling cannot pick 5 wickets of Sri Lanka, how is Virat Kohli going to answer? क्या जवाब देगा? We picked one. Can you imagine? We picked. Oh, Michael Atherton rightly said. So 300 runs and India picks up 1 wicket. 1 wicket. The other 2 were basically run-outs. Yeah. So I'm sure you must have heard that comment. Yeah. So it was so disappointing. Bumrah, Umesh, Bhuvaneshwar, Ravindra Jadeja, all these guys were looking pretty much clueless. Very, very bad game. But I think the group has been blown wide open like a balloon. कोई भी आ सकता है. And interesting, think about this. 2 teams who were billed as the potential contenders or at least the semi-finalists are now fighting for a spot. One spot. कोई एक ही आ सकता है. And I said this, मैं कल जोक में बोला, किसी ने लिखा तुम जोक मत मारो, वो बरोबर हो रहा है करके. Anybody would have said you put money on Sri Lanka, I would have said no, because Sri Lanka I still maintain. Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh का तो मैं गिनती में ही नहीं लेता. Bangladesh should pack their bags. You know when Mashrafe Mortaza said that we still have a chance, I said तुमको शर्म आना चाहिए. तुम 2 मैच तुमको पकड़ के धोएल है. You should pack your bags and go to Bangladesh. Nobody wants you in England. Please go. So and still you're hoping. Rain has played havoc. Now let's come back to fantasy cricket. नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल दूंगा इनके बारे में. So we are talking Australia and England. It is the Ashes before the Ashes. So in fact we are covering 2 matches today. Yes. It's Australia versus England, and the second one is between India and South Africa. Okay, now this match, Australia versus England, is a knockout for Australia. Yes, correct. And they have to win this to find a spot. India versus South Africa is also a knockout. It's a quarter-final. But I'll tell you how India can qualify even without the match being played. If it gets rained off, chances hai, bilkul. Then India will have 3 points. South Africa will have 3 points. Correct? Pakistan, Sri Lanka में जो भी एक जीतेगा उनको 4 तो मिलने ही वाला है. Let's say Pakistan wins. So Sri Lanka is out. India, South Africa tied at 3. India has a slightly better run rate. Yeah. India will go through. Okay. So, but अगर बारिश का ही उम्मीद करना है तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलो ही मत ना. बांग्लादेश की तरह. Yes, bilkul. Yes. Okay, so I'll just go through the team of England versus Australia. We start with Matthew Wade. Hey, did we say that Stephen Finn has been called in to replace Chris Woakes? अगर हमने नहीं बोला तो हम बता देते हैं. Okay, so Stephen Finn is back. Yeah, so the team. Matthew Wade, we start with Matthew Wade as keeper in batting. क्यों Matthew Wade? आपको ये सब जवाब देना होगा. हाँ, आप बस पहले टीम तो बात कर ठीक है. Okay, in batting lineup we have Joe Root, Steven Smith, David Warner, Alex Hales. In all-rounder we have Moses Henriques, Ben Stokes. In bowling category we have Jake Ball, Josh Hazlewood, Liam Plunkett, Mitchell Starc. Now, why Matthew Wade? 2 of the toughest matches to play fantasy cricket, that is Australia, England and India, South Africa. क्योंकि these were the 4 teams considered as the semi-finalists and इनके सारे player are highly priced, so it is very difficult to find the right balance with a match-winning team. Plus playing 11 बहुत जरूरी है. On record, I think अभी 7-8 matches of Champions Trophy over, only 1 match 11 हमारे field में नहीं थे. Otherwise, we've got our playing 11 right on 7 or 8 occasions every time. One was that Junaid Khan and Mohammad Shami both didn't play. So we again strive to get that correct because we firmly believe that 11 is a very important tool for you to start on a positive note. Coming back to this match, why Wade? Wade is very lowly priced as compared to Josh Butler. Majburi mein liya? Haan liya. Number 2, Warner, Smith. Now I want to ask you, given the form, given the class, can you drop a Smith or a Hales or a Morgan, Root and Warner? No, I mean this is no question because you can't drop. ये question है. ये question है. तुम मेरे साथ रूम में बैठे हो तो तुम बोलोगे नहीं. बाहर ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि नहीं इसको नहीं होना चाहिए उसको होना चाहिए. तो आप प्लीज अभी उनकी तरफ बात करो. Okay. So that I can at least answer, because this is the stage, man. This is I understand, podcast. but I can't question on कि Warner क्यों लिया. नहीं आप करो क्वेश्चन. Okay. ताकि क्या है कि मेरे को ऐसा लगेगा कि वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे दूं. Let's start with the weak link in this all 4. Yes, weak link, correct. Why Alex Hales? Alex Hales.
So Alex Hales, from the time he started playing the West Indies, which was about a few months ago, started scoring 50, 100, then 2 ODIs against Ireland, and then 3 matches against South Africa. अभी भी I think almost एक 50 मार दिया है. He's in great form, and wickets जैसा चल रहा है. One of Roy I think can be benched, but you have to, okay, in this Champions Trophy, regardless of कौन सी टीम खेल रही है, every opener has performed, Nikhil. Yeah. Okay, you look at South Africa, Amla de Kock. You look at India, Rohit Shikhar. You look at Australia, Warner and Finch has not performed, but Warner has performed. Then you look at New Zealand, a Martin Guptill or a Luke Ronchi. So everybody is performing. We can't take Sri Lanka and Pakistan into this equation because their batting is a little wobbly. So, and England, you see, Hales has been performing. Yeah. So, Not Roy. सो कंडीशंस अगर फेवरेबल है बैट्समैन को और अगर ओपनर अच्छा खेल रहा है तो हेल्स को तो होना ही चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी पिक हेल्स. Okay. ऑन फॉर्म, ऑन कंडीशंस, दैट्स व्हाई. I don't think I can ask this kind of questions. Why Warner? Why Smith? And why Root? But yeah, शुक्रिया. this question. Why Moses Henriques? सस्ता है, मजबूरी है, लेना ही और पड़ेगा. कोई प्लेयर नहीं है. और कोई प्लेयर आपको 8 पॉइंट में नजर भी नहीं आएगा. कोई भी पॉइंट आपको, अगर मैक्सवेल लेना है, मैक्सवेल महंगा है, हेड लेना है, हेड महंगा है, आप किसको लोगे? किसको भी नहीं ले सकते. बट खेलेगा. लास्ट 2 मैच तो खेला था. वी फेल्ट हिज स्पॉट माइट बी अ लिटिल रिस्की. दे माइट प्ले somebody else, but no, Steven Smith said he gives me that balance, and he bowls also 5 or 6 overs. He got a wicket. He bats at number 5. In fact, he was padded up when Smith and Warner. Okay, so अगर आप मैचेस नहीं देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही थी, जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे at 80 for 1, that is Smith and Warner, the next guy padded up was Moses Henriques. I hope that answers a lot of questions, which means in layman's language he might bat number 4. Okay. अगर क्रिस लिन नहीं आता, क्रिस लिन आता है तो मेरे ख्याल से एरन फिंच जाता है. तो ये हमें, इनफैक्ट निखिल, यू नो व्हाट वी शुड डू इज, जो हम लेते हैं ना, उनके अलावा हम जिसको नहीं लेते वो उसके बारे में भी बात करना चाहिए. अदरवाइज वी गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस. सो व्हाई नॉट फिंच? मैं आपको बता दूं, फिंच नहीं, बिकॉज ही हैज बीन गोइंग थ्रू अ लो फेज. क्रिस लिन हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म. अगर लिन ओपनर है, आप आईपीएल तो देखते ही हो, तो उसको अगर खेलना है तो कौन जाएगा भैया? एरन फिंच जा सकता है. Okay. ऐसा हम कहते हैं. अब अगर स्टीवन स्मिथ मना कर दे तो हमें माफ कर दो यार. Okay, in bowling category we have Jake Ball. Why? जेक बॉल अगेन. ओके, सो 2 ऑप्शंस है, जेक बॉल लो या फिर आप मार्क वुड लो. मार्क वुड picked up 1 wicket in 2 matches. Ball has, I think, 3 विकेट ले चुका है. लास्ट मैच में भी 2 लिया था. एंड प्लंकेट, बहुत जनों ने पूछा था, अगर आपको याद होगा, वाई प्लंकेट? यू लुक एट द नंबर ऑफ विकेट्स ही इज गेटिंग, निखिल. आई डोंट केयर व्हाट टाइप ऑफ बॉल्स ही इज बॉलिंग, बट विकेट मिलता है 2-3, तो व्हाई नॉट? बट आई विल टेल यू व्हाट, तुमने मोइन अली नहीं लिया. मोइन अली नहीं लिया, देखा, मोइन अली नहीं लिया. मोइन अली इसीलिए नहीं लिया, और मेरे को लगता है इस बार की मोइन अली खेल सकता है. मेरे पास बजट नहीं है. अब देखो, अगर स्टोक्स को भी ले, मोइन अली को भी ले, तो फिर वो वहां पे जो ऑलराउंडर सेक्शन है ना, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी. और आपको एक बैट्समैन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. नहीं, बट लास्ट टाइम जैसे उसको ओवर ही नहीं दिया भाई, सीरियसली. बट ये क्वेश्चन रहता ही है कि क्या करने का है मोइन अली का. अभी मोइन अली आप स्टोक्स के आगे तो नहीं ले सकते हो यार. सो दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट. और अगर उसको बॉलिंग देना ही नहीं है, हु नोज. आई एम कन्विंस्ड, यू नो, that all these cricketers at the back of their mind, when they step onto the field, they know somebody is playing fantasy cricket. और किसी ना किसी ने उसको लिया है. नहीं, बस. नहीं, तुम देखो, आप जो भी सुन रहे हो ना, आप देखो, ये एक दिन होने वाला है. क्योंकि जब आप आईपीएल में देख रहे थे, एक दिन ऐसा आया था, आईपीएल फैंटेसी, द कमेंटेटर्स ऑल्सो टॉक अबाउट इट, द प्लेयर्स ऑल्सो. डोंट पुट फैंटेसी क्रिकेट इनटू बैटिंग. मैं बैटिंग नहीं, अरे मैं बैटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ. क्या आपने ऐसा शब्द? बिल्कुल भी नहीं. नो, दिस इज नॉट बैटिंग. सो दिस इज अ गेम ऑफ स्किल. ठीक है. तो व्हेन कमेंटेटर्स आर सेइंग, प्लेयर्स को भी ये पता चलता रहेगा. मैं कह रहा हूँ, देखो, एक दिन हम फेमस बनने वाले. देखो. ओके, तो बॉलिंग तो फिनिश करो यार. वो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, क्वेश्चन ही नहीं है. पक्का नहीं है ना क्वेश्चन? हेजलवुड, स्टार्क. फिर मेरे को अगर कोई व्हाई नॉट कमिंस करके क्वेश्चन आया तो, हाँ, तो अभी कितना जगह Correct. So there goes the answer. Yes. Yeah, guys, by the time you're listening to this podcast, ये आर्टिकल शायद तक अप होगा हमारे वेबसाइट पे, तो just have a look at the team. बट जो हम नेक्स्ट मैच डिस्कस करने वाले हैं, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसका आर्टिकल थोड़े टाइम बाद आ जाएगा. सो थोड़े टाइम बाद, हाँ, मतलब
आएगा. थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि दिस मैच इज ऑन संडे. Yeah. So और टुडे इज फ्राइडे. yeah, so let's move on to India versus South Africa, a quarterfinals, a knockout. We know South Africa, उन लोग को उनका pet name बहुत अच्छा है. So hopefully India will win that. Let me go through the team first. What pet name are you talking about? Chokers. Okay, it's a quarterfinals. Pet name प्यार से दिया जाता है. ये दुश्मनों ने दिया है. Okay, let me go through the team first. We have Quinton de Kock as a keeper. In batting, we have David Miller. ये जबरदस्ती का है, I think. 100%. Virat Kohli, Hashim Amla, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma. In all-round, we have Ravindra Jadeja, Chris Morris. And in bowling lineup, we have Bhuvneshwar Kumar, Bumrah, and Kagiso Rabada. Hurry, this name, it's very funny. Bhuvneshwar. Suddenly people have started calling in Bhuvi. Yesterday Michael Atherton on air said Bhuvi. I was like really startled. How can you say this, man? You're an Englishman. You can't be saying Bhuvi and all. You have to say Bhuvneshwar Kumar. That's how you... क्या अभी एक सेकंड पहले तुमने बोला था ना पेट नेम प्यार से दिया जाता है. हाँ नहीं, which is correct, but मैं तो शॉक था कि इंग्लिशमैन कैसे ऐसे बोल रहा है. So that's how it is. Anyway, बहुत after this IPL now most of these commentators forget the English commentators. Yeah, man. Yeah, because they spend so much time in India. Yeah. You can't blame them, no? Captain is Quinton de Kock. Now that's a big move. Big move. Yeah. Okay, so again, he has been starting. Okay, वो continue नहीं करा है उसका. There is okay. Let's discuss the options. Hashim Amla, AB de Villiers, Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan and Quinton de Kock. I think 6 options you have. Yeah. Okay. Now, I'm not saying Virat Kohli is a bad choice. I was really tempted. I thought about Virat Kohli for a while. Then I said I will go with somebody who attacks, who has a tremendous record against India. And that guy happens to be Quinton de Kock. A few years ago, when India toured South Africa, he smashed us all over the park. And even when South Africa played that 5-match series here in India, when we lost the series, Nikhil, you will remember 438 at the Wankhede. You were watching. मैं घर पे बैठ के मजा कर रहा था. तुम स्टेडियम में बैठ के मजा कर रहे थे. So South Africa won that match. Yeah. And when the whole of Wankhede was chanting ABD, that match also ABD scored. Every match he scores against India almost. So I pick him. The conditions are going to be favorable, and if somebody has to attack at the top, it has got to be Quinton de Kock. You can go with Rohit, you can go with Shikhar, you can go with Hashim Amla also. कौन है हमारा वाइस कैप्टन? Shikhar Dhawan. देखो, Shikhar Dhawan first match against South Africa Champions Trophy. But why not? I made this point, Nikhil, when we did the preview. I think you missed out. You were not here. You were doing your shifting, and I said Shikhar Dhawan might once again turn out to be a top scorer for India because he's Champions had Trophy. In Champions the love Trophy. Affair with Champions Trophy. Exactly, and he opened the campaign with 100 against South Africa in Cardiff in 2013. And I remember the attack was Dale Steyn, Mone Mokel, if I'm not wrong, Philander bhi tha. So he has the ability to score, man. And the form, like I say, openers को बनाओ. अभी ऐसा हो सकता है कि Shikhar Dhawan could go out for a 0. Or a 10 or a 15. Virat Kohli might score 65. Rohit Sharma might score 35. You don't know. So, out of 6 options available to you, you have to take a call. Based on gut, based on form, based on conditions, opposition. Aapki But tell me one thing, Malab. Why not Virat Kohli as a captain? Just because he got a 0 against Sri Lanka? No. Definitely not. I would be the last guy to say that because class... We always believe in this theory. I just feel it's a big match. I don't know. I don't. He doesn't crumble in big matches. No, he doesn't. No, I'm not saying all that. I just get a feeling. See, this is about a feeling. Nothing more to it. I just feel nahi, maybe not Virat Kohli. That's all. Okay. Otherwise, ऐसा कुछ भी नहीं है. If he gets 100, I will not be surprised. So and guys, मतलब ये ऐसे debate नहीं हो रहा है. See, the thing with India matches is वो एक क्विंटन डी कॉक को कैसे कर सकते हो यार? उसको 0 पे जाना है. हाँ, मतलब बिल्कुल. As an Indian fan, you should be saying that. There is no doubt about it. But I just feel Quinton de Kock for this day and Shikhar Dhawan. That's all. That's the logic. One more doubt. Why not Mone Mokel? Mone Mokel because he picked up 3 wickets. Somebody wrote to us asking Corey Anderson. तो मैंने उसको लिखा 300 साल में 3 विकेट लिया यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? तो Mone Mokel again a tremendous bowler, but he could be benched. I don't know. After 3 wickets, what if they decide to play Keshav Maharaj? नहीं होने वाला है. इंडिया के साथ 2 स्पिनर नहीं खिलाएंगे. Imran Tahir will bowl. They will retain the same 11 in my opinion. The only guy whose spot is in danger is Wayne Parnell. He could be replaced by Andile Felukwayo. Otherwise, I think even JP Dumini will play.
he will get one more chance. David Miller is sheer out of desperation. Okay. और कुछ भी नहीं है. और क्या है हमारे पास? फाफ डू प्लेसी भी घूम रहा है ना उधर? नहीं घूम रहा है, हशीम आमला घूम रहा है ना. हशीम आमला है. वी हैव गॉट विराट कोहली तो टीम में रहेगा ही. रोहित शर्मा भी रहेगा. देखा, टॉप 3 को तो मेरे को लेना ही था. रविंद्र जडेजा इज द सीक्रेट weapon मेरे हिसाब से, because against South Africa, record phenomenal. South Africa don't play spin bowling that well, and he is the genuine wicket taker. If somebody draws a logic saying he went wicketless against Sri Lanka, that might happen against South Africa also. You could be wrong, so we persist with possibility of Ashwin coming back. High chances, but वैसा सोच के लेना और नहीं खिलाया तो महंगा पड़ सकता है. मटका टीम में अश्विन कैप्टन. It could work. Okay. It could work. I'm telling you. South Africa 66 for 5 हो सकते हैं. इतना भारी टीम है, मैं जानता हूँ उनको. तो बॉलिंग क्या है जरा देख लो यार. भुवनेश्वर कुमार वो तो एकदम. बुमराह एंड रबाडा. अगेन लोग बोलेंगे क्या कर रहा है बुमराह. भाई बुमराह ले लो. It's as simple as that. When you talk limited overs cricket, any opposition, any conditions, pick Jasprit, pick भुवनेश्वर कुमार, and एक और कौन है? रबाडा. अरे रबाडा तो निखिल का फेवरेट है, मैं उसको ड्रॉप ही नहीं कर सकता. One day he took it off and I dropped him. एक मैसेज आया था ऑफिस में. One thing I have noticed is हशीम आमला को तुम लिमिटेड ओवर्स में कभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाता हूँ. Seriously? हाँ बनाता हूँ. बट व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. अभी नहीं अभी एक्चुअली यू आर राइट. साउथ अफ्रीका ने इन द रिसेंट पास्ट, जब से हम फैंटेसी कर रहे हैं, लेट्स से 1 महीने की या 2 महीने की मैं बात करूंगा, एंड ड्यूरिंग दैट फेज आई प्रोबेबली माइट नॉट हैव गॉन विद हशीम एज अ कैप्टन इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट. सो दैट्स अ फेयर ऑब्जर्वेशन. देखा, वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड बी डूइंग दिस पॉडकास्ट. कभी कभी अकेले भी करो. नहीं वो एक्सटेम्पोर हो जाता है. ऐसा लग रहा है स्कूल में हूं मैं. Anyways, guys, if you have any doubts, connect us via Twitter, TFG Fantasy 11, and on Facebook as Fantasy Pundit. You can listen to this podcast on IndusVox Media, SoundCloud, iTunes, Audio Boom, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment. Till then, take care, guys. Bye-bye. एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी. बोलिए मैडम. मेन्यू में क्या है? मेन्यू में सीन अनसीन है, पॉडकास्ट है, ऑन कोर्स है, साइरस है, मेड इन इंडिया, रीडिस्कवरी प्रोजेक्ट, एम्पावरिंग सीरीज, सेक्स वैक्स है, IVM लाइक्स है, सिंप्लीफाइड है, कीपिंग इट क्वियर है, टिंग्स एंड डेस्टिनेशंस है, माय नेबर जकरबर्ग है, और द फैन गराज है. आपको क्या चाहिए? एक बार रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट नहीं करता हम. आप जाओ IVMpodcast.com पे और सुनो ये सब, या फिर डाउनलोड करो उनका ऐप. सब आपकी उंगलियों पे.